So in today's class, बच्चों, we are going to talk about electrolysis of aqueous solutions. आज हम बात करने लगे हैं electrolysis of aqueous solutions, right? Electrolysis of aqueous solutions, right? Aqueous solutions means, बच्चों, that the solution which is made in water, right? Or suppose you have NaCl, if you dissolve that in water, so this is aqueous solution, right? So if you talk about aqueous solutions, so we have two types of aqueous solutions. Number one is concentrated solution. Number one is concentrated solution, and number two is diluted solution, right? Concentrated solution and diluted solution. This is actually the amount of salt you are adding in the water, right? For suppose if you have a beaker, right? For suppose if you have a beaker right here like this, and this beaker, the size of this beaker is absolutely same the size of this beaker. For suppose they both are absolutely same, for suppose, right? And I am having water in this beaker, right? I'm having water in this beaker, and the same volume of water will be taken in this beaker as well, for suppose, right? Same volume of water in both beakers, right? And what I'm doing over here, for example, if I'm adding 5 teaspoons of salt over here, 5 teaspoons of NaCl salt over here, and over here I am adding only 2 teaspoons, right? NaCl. So this is what telling you that this solution have a high concentration or high amount of NaCl. So this is concentrated, and the one which has greater amount of water is known as diluted. So you can say that in the concentrated solution you will have greater salt, right? And in the diluted solution you will have greater water, right? You have greater water, because we are talking about aqueous solution, so that is why I'm using the word water all the time. Aqueous solution is such solutions which are made in the presence of water, right? And you are going to dissolve something into the water, right, bacho? Yes, sir. Sure. Okay, so now let's move towards one of the example. So we are doing towards the electrolysis. We are doing what? Electrolysis of aqueous concentrated NaCl. Aqueous concentrated पर NaCl. में अलग-अलग आती हैं, like mentioned होता है कि aqueous है, Yes. एक aqueous concentrated है, अभी diluted. Yes, बिल्कुल ऐसी होता है, right? And what we are doing using inert electrode, So we are doing what? We are doing electrolysis of aqueous concentrated NaCl using inert electrodes. You can even say that using carbon electrode, because carbon is one of the example of inert electrode, or you can even say that graphite electrode. So they all are the same things, right? We are doing this because we don't want that electrodes are going to take part in the chemical reaction. So these are right now, they are away from the chemical reaction process in the electrolysis. So right now you have a beaker, right? In this beaker, we have 2 electrodes that are made up of carbon or graphite. You can say that this is one of the electrode made up of what? Made up of carbon or graphite. And this is the second electrode, which is made up of what? Carbon, right? So we have 2 electrodes that we dip into the solution right now, and we connect these 2 electrodes with battery, right? For the electricity, right? So we did connect these 2 electrodes with battery. This one is negative and this one is positive, for suppose. And I use what? I am using the solution in this, and this solution is right now what, bacho? We just use aqueous NaCl in the concentrated form. So this is aqueous NaCl, which is concentrated. That means we have more salt in this, right? We have more salt in this, and water is in a lesser amount, right, bacho? This is the setup. Is that clear to you? Yes. This is the connection, right? So the wire are actually connecting what? Battery with the electrode, and the solution we have right now, aqueous NaCl aqueous, and this is actually concentrated NaCl, right? So bacho,
First of all, you need to know this, that which one is cathode and which one is anode. So we know that negative is cathode. We know that negative is cathode. So which one is cathode, bacho? Negative is cathode. So it means we have this one is cathode, right? This one. This one is cathode and this one is anode, right, bacho? Right. Yes, Yes, sir. Now, let's talk about ions over there. If you talk about ions, so how many ions we have in this solution? If you talk about ions, so बच्चों देखो सबसे पहले तो आपके पास है NaCl ना, तो Na का ion होगा, there should be Na positive ions, right? और Cl का ion होगा आपके पास. These two ions are present in the salts. That's fine. But we also have water over there because we have aqueous solution. So the NaCl is going to dissolve in water. So we must have water over there as well. If you talk about water, so in water we have H positive ions and OH negative ions. So these are the ions that are present in the solution right now. Is that clear, बच्चों, or not? सर इन concentrated में तो water नहीं होता. क्यों, पानी में डिसॉल्व तो किया है ना आपने, पानी कम है बट है तो ना. Okay, sir. पानी कम है बट है जरूर, ठीक है भाई. तो कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूटेड हो, एक्वस अगर होगा तो इसका मतलब यू हैव वाटर ओवर देयर, ठीक है. concentrated यानी solute ज्यादा होगा. Yes, बस इसमें ये है कि आपके पास solute ज्यादा होगा. You have a greater amount of solute which you are adding to dissolve, right? Now let's talk about cathode. We know that cathode is actually negative terminal. So this is negative is cathode. We know that. So it attracts positive towards it. So definitely sodium ions and hydrogen ions both are moving towards cathode, right or not, बच्चों? दोनों ही positive है ना, तो दोनों ही negative जी. terminal की तरफ जाएंगे. So there should be the moving of sodium ions and hydrogen ions as well from the solution. दोनों के दोनों ions they are start moving towards cathode. But the problem is which one form product. इन दोनों में से product बनाएगा कौन? This is the problem. So बच्चों, for this you need to keep remember the reactivity series and you need to say that the less reactive, this is the reason as well, the less reactive will gain electrons readily and form product at cathode. This is only for cathode, right? We always see the reactivity series for cathode, right? And what is the reactivity So series H that plus you is need to less remember? reactive. Yes, you need to learn the reactivity series I am showing over here. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, lithium. zinc, iron, lead, hydrogen, copper, silver, and gold. This is what the reactivity series that you need to keep remember for cations, or you need to remember this for cathode as well. आपके पास cathode पे हमेशा वो product बनाता है जो कि less reactive होता है. So this is the most reactive. This Yes. is the most reactive one, right? And this is the least reactive one, right? ये सबसे कम है और ऊपर वाला सबसे ज्यादा है. So right now we have two ions in the solution. Number one is sodium ions and number two is hydrogen ions. So you can see this. Which one is less reactive, बच्चों? Hydrogen. So hydrogen ions will go over the cathode and we know that cathode पे हमेशा gain of electron होता है. So it will receive one electron to form hydrogen atom. But hydrogen is actually a gas and it is always in diatomic form. So it should be H2. And for this, we should have two H ions as well. And each H ion receive one electron, so it will form hydrogen gas. Is that clear? Yes. And if you talk about the product at cathode, if examiner asks what is the product at cathode, so you can simply say Hydrogen that gas. hydrogen gas. You need to keep remember this, but you need to write the name if they ask for product, right? You don't need to Yeah. write H2 over there. You must need to write the name, right? And if they Sir, ask observation. for observation, so you can say that Bubbles of colorless. yes, bubbles of colorless gas, because this is hydrogen, which is colorless gas. So you can say that bubbles of colorless gas. Is that clear, every one of you? जी.
Let's move sir. towards anode. If you talk about anode, बच्चों, सर क्लियर नहीं है बोलो क्या पूछना है बताओ. सर, ये नहीं समझ आ रहा कि सर मतलब लेस रिएक्टिव क्यों उसको रिप्लेस करेंगे. लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है, ठीक है ना. So that is why it will move towards cathode and gain electrons. Highly reactive is, you can say that जो metal highly reactive होते हैं ना, उनके अंदर ability होती है कि वो अपने electrons देकर रखते हैं, वो अपने electron donate कर रखते हैं, ठीक है ना. तो जो highly reactive होगा वो अपने electron पहले दे देगा, ठीक है ना. वो electron receive नहीं करेगा, वो electron दे देगा. That is why जो less reactive होगा वो electron लेगा और side पकड़ लेगा, ठीक है ना. आप for suppose आप एक बहुत मोटे ताजे इंसान है, ठीक है ना, और आपकी चेयर के ऊपर आके कोई पतला दुबला सा इंसान बैठ गया है, तो आप जाएंगे और उसको उठा के पटक देंगे साइड में, बोलेंगे निकले यहाँ से शाबाश, ठीक है ना. लेकिन अगर कोई पतला इंसान, उसकी चेयर पे कोई आप जैसा मोटा इंसान बैठ गया, तो क्या वो हटा सकता है बेचारा? नहीं हटा सकता ना. तो सेम कंडीशन ओवर हियर. सोडियम हाईली रिएक्टिव है. अगर उसने देखा कि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों एक साथ हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन को बोलेगा आप इलेक्ट्रॉन पकड़ें और निकले यहाँ से, ठीक है भाई. ओके, सो सर मतलब कैथोड के साथ हाइड्रोजन स्टिक होगा. हाँ, स्टिक नहीं होगा, ये तो गैस है ना, तो वहां से निकलेगा. स्टिक होता है वो जो मेटल होता है, ठीक है. तो ये गैस है, ये एवोपरेट हो जाएगा और ये वहां से आप कह लें वहां निकल जाएगी, वहां से जो ना बबल हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी वहां से. ओके सर. अब एनोड पे क्या होगा बच्चों? एनोड पे वी हैव टू आयंस अगेन, एंड व्हिच वन इज ओवर देयर एट एनोड? क्लोराइड आयंस, एंड वी हैव हाइड्रोक्साइड आयंस एज वेल. सर सोडियम आयंस कहाँ जाएंगे? सोडियम आयंस नीचे ही रहेंगे सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. वो आखिरी में देखते हैं क्या बनता है. अभी फिलहाल वो सॉल्यूशन में रहेंगे, तो जी. हाइड्रोजन निकलेगा खाली, ठीक है ना. सो एनोड पे क्या होता है आपके पास बच्चों? एनोड पे क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड में से कोई जा सकता है, ठीक है ना. अब एनोड पे क्या होता है? जो ज्यादा होता है वो जाता है, ठीक है ना. जो सर अमाउंट, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो क्लोरीन जाएगा जी. यस, जो अमाउंट में ज्यादा होता है ना, द एनाइन व्हिच इज ग्रेटर इन अमाउंट, ठीक है ना. सो यू कैन से दैट एनाइन with greater amount will form product. Greater amount will form product. Now you can see this कि आपके पास सॉल्ट कैसा है? आपके पास है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड. आपके पास सॉल्ट कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि सॉल्ट ज्यादा है, पानी कम है, ठीक है ना. सॉल्ट ज्यादा है और पानी आपके पास कम है. तो इसका मतलब ये है कि जब सॉल्ट ज्यादा है तो क्लोराइड ज्यादा है, पानी कम है तो हाइड्रोक्साइड कम है. तो क्या चीज ज्यादा होगी बच्चों? क्लोराइड ज्यादा हुआ. क्या ज्यादा हुआ हमारे पास? क्लोराइड ज्यादा हुआ. तो जो ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा. एंड वी ऑलवेज नो दैट कि एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and it will form chlorine atom. But chlorine is actually diatomic gas, so it is Cl2 all the time. So for this, you must have two chlorides, and each chloride, when lose one electron, it will form two electrons plus chlorine gas. And if you talk about the product, so you can say that this is actually chlorine gas, right? And if you talk about the observation at anode, so the observation at this electrode is actually, you can say that yellowish green gas bubble, right? Or you can say that the bubbles of yellowish green gas, bubbles of yellowish green gas. The color of chlorine is yellowish green, so you can say that yellowish green gas bubble, right बच्चों? And now तो the thing सर is, इसका जो प्रोडक्ट होगा एनोड पर वो लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पर? देखें, आप देखें ना, ये इलेक्ट्रोड आपके पास लगे हुए हैं. कैथोड कौन सा है? कैथोड आपके पास ये वाला है ना, राइट हैंड साइड वाला. तो यहाँ से आपके पास निकलेगी हाइड्रोजन गैस व्हिच इज कलरलेस, राइट. और यहाँ से आपके पास येलोइश ग्रीन गैस निकलेगी व्हिच इज द प्रोडक्ट एट एनोड, ठीक है. एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव. यस. सो अब सीन क्या है? अब है रिमेनिंग सॉल्यूशन. व्हाट इज द रिमेनिंग सॉल्यूशन? सो द वन यू आर आस्किंग अबाउट रिमेनिंग सॉल्यूशन. तो भाई रिमेनिंग सॉल्यूशन में बच्चों हमारे पास क्या बचा है? Remaining solution, you will have sodium ions in the solution and hydroxide ions in the solution. So they will combine together and form sodium hydroxide, right, bacho? And this is alkali. So you can say that at the end of reaction or after the reaction, you can say that the pH increases, right? And pH increases to 10 or 12 somewhere, right? Or you can even, if you add universal indicator over there, so it will show blue color. जी. So this type of question you will find in paper 1, 2 and 4. सर
सर ब्लू या वायलेट? ब्लू कलर या वायलेंट कलर एक ही बात है, ब्लू कलर इज एक्सेप्टेड एक्चुअली, राइट। नहीं सर, अगर ज्यादा रिएक्टिव हो तो वायलेंट कलर होगा। ब्लू कलर भी आपके एग्जाम में मार्किंग स्कीम में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बेटे। वायलेंट आपके जो यूनिवर्सिटी कलर है वो ब्लू, ठीक है, कोई मसला नहीं। सर इसका अगर हम चार्ज ज्यादा जीरो टाइम रहेगा Na प्लस और वायलेंट OH कलर, नहीं। और वो मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए ना। अगर हम बोले वायलेंट कलर और पर्पलिश की तरफ चला जाएगा और ब्राइट येलो हो जाएगा और रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स ना। दैट इज व्हाई ब्लू एंड रेड इज इनफ, राइट। जब मार्किंग स्कीम एक्सेप्ट कर रही है तो हमें क्या जरूरत है, ठीक है भाई। जी सर। जी, और किसी को कोई सवाल है इसमें? आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं क्योंकि मुझे एक और कराना है आपको अभी। आप इसकी पिक्चर ले सकते हो बच्चों, फिर हम चलते हैं एक और सेकंड की तरफ। सर मेरा एक सवाल था, ये NaOH का चार्ज न्यूट्रल रहेगा ना, क्योंकि वो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। यस, वो कंपाउंड है ना, तो न्यूट्रलाइज हो गया। जी। कंपाउंड्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। जी जी। सर आपने pH का कैसे बताया? पीएच का हमने ऐसे बताया, NaOH इज अल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट। वी नो दिस, हमने एसिड बेसिस पढ़ लिया है ना, तो उसके अंदर NaOH, KOH, दे ऑल आर alkalis, राइट। So when you talk about alkalis, so they must have more than 7 pH, right? ओके सर मेरा क्वेश्चन ये था, सर रिक्वेस्ट ये थी कि सर इसका पास्ट पेपर कोई क्वेश्चन दिखा सकते हैं आप? बेटा पहले हम पूरा कर तो लेना, तभी तो पास पेपर्स करेंगे ना। ओके सर। क्योंकि पास पेपर्स तो हम हर क्लास के एंड में करते ही हैं, ये तो आपको पता है ना। तो फिर ये बोलने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। ओके सर। ठीक है बच्चों, आगे चलें, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ चलें बच्चों। चलें, let's talk about dilute solution. If you have NaCl aqueous but it is dilute, for suppose we are doing what? We are doing aqueous NaCl, right? Using aqueous NaCl, and this is dilute this time, right? So for suppose electrolysis of aqueous NaCl, electrolysis of aqueous सर डिफरेंस बट di डिफरेंस सिर्फ एनोड पे होगी ना, क्योंकि yes, डाइल्यूट। yes, right. So right now we have aqueous solutions of dilute NaCl, right? And this is actually again the same thing. If you talk about beaker, in this beaker you have what? You have a solution of NaCl, right? And this is a solution of NaCl, and this time the solution is actually what? This is diluted NaCl, and we are adding 2 electrodes over there, and these 2 electrodes are inert electrodes. They are not taking part during electrolysis. They are just transferring the electricity to the solution, and then we connect these 2 with the battery. One is negative and one is positive, right? So the positive one is anode and the negative one is cathode, right? So right now, what about the ions? If you talk about ions, bacho, so again, the ions are same. We have sodium chloride, so sodium ions are there, chloride ions are there, and we have water as well. So hydrogen ions and hydroxide ions are there, right? If you talk about cathode, so cathode is again remain same. Why? Because all the time at cathode, the less reactive will form product. So again, we have sodium ions and hydrogen ions, and between these 2 ions, we have hydrogen, which is less reactive, so it will gain electrons quickly and out of the park, right? So you can say that hydrogen will receive electron and form hydrogen gas. So this will be the hydrogen at cathode. So it will be the hydrogen gas which is produced at cathode, and the bubbles of colorless gas will be seen. And if we talk about anode, so right now this is dilute solution. So if you talk about dilute solutions, so in dilute solutions, but we have greater amount of water. Dilute means we have more water. We have greater amount of water. When you talk about we have greater amount of water, so definitely we have greater amount of hydroxide ions. So these ions are greater now. So if you talk about hydroxide ions, so it will form the product like hydroxide ions lose electrons and form what? Water molecules and oxygen gas, right? Water again, this is a liquid, so it will remain in the solution, but the product which is going to form is oxygen. You need to keep remember this. अगर आपको ये परेशानी है कि इक्वेशन बनी कैसे, तो देखें हाइड्रोक्साइड, एक दूसरा हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, फॉर सपोज आपके पास है सेम एज इट इज, आपके पास यहाँ पर जो है
एक और हाइड्रोक्साइड है, राइट, और एक और हाइड्रोक्साइड है। वी हैव 4 हाइड्रोक्साइड, राइट। जब 4 हाइड्रोक्साइड है तो बच्चों ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स? देखें, ये मिलकर क्या बना लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये मिलकर बना लेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज H2O एंड दिस इज H2O, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, ऑक्सीजन गैस, राइट। तो 4 हाइड्रोक्साइड forms 2 water molecules and 1 oxygen gas. This is actually the equation for hydroxide. This is the balance equation. And if you talk about product by this, definitely water is also one of the product, लेकिन वो solution में ही रह जाएगा। तो एनोड पे आपको क्या मिलेगी बच्चों, ऑक्सीजन गैस आपको लिबरेट होती हुई नजर आएगी, रिसीव ऑक्सीजन गैस होगी। जी सर एनोड पे हम लोग दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं ना, जैसे 4OH minus 4 electrons gives O2 plus 2H2O। देखें, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो दैट्स द सेम थिंग, राइट। So this is what bubbles of colorless gas, again क्योंकि oxygen is also what, colorless. Is that clear बच्चों? Is that clear बच्चों? You can take a picture of this as well. जी सर। और आसानी के लिए आप ये याद रख सकते हैं, whenever you have dilute solution, so all the time at anode you will find this equation. So this is the very important equation for the electrochemistry. You need to learn this whenever you have dilute solution. Whenever you have dilute solution, all the time at anode you will find this equation. So this is fixed. You need to learn this, right, bacho? So let's have one example now. So this is the time for a skill test. Just start. Show me your skills. So I want that you will do this. For example, you have concentrated HCl, concentrated aqueous HCl, and you have diluted aqueous HCl. So what are the products at cathode, anode, and what are the observation at cathode and anode? What are the reaction at cathode and anode? What are the remaining solutions, right? Just do it quick and send me your answer so I can check you are getting the things or not.